Good morning, friends. Myself, Dr. Ravinder Kumar. Uh, I am assistant professor working as an in SBS College, situated at Makadoli Kala, Rohtak. Friends, today my topic for lecture is of bail provision under CRPC. तो अगर हम बेल की बात करें CRPC की, तो बेल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है CRPC में। और बेल एक तरह की सिक्योरिटी है जो कि एक्यूज्ड के द्वारा दी जाती है कोर्ट में, कि वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उनको टाइमली अटेंड करेगा, और जो कि पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड के द्वारा उसको इंश्योर किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेल जो है एक तरह का मैकेनिज़्म है जो कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस को इंश्योर करता है कोर्ट के अंदर। दो तरह की अथॉरिटी हैं जो बेल ग्रांट कर सकती हैं। नंबर एक कोर्ट एंड द सेकंड वन इज़ पुलिस। तो बेसिक फंडामेंटल अगर हम कहें तो बेल का यही है कि वो एक्यूज्ड की जो भी ट्रायल कोर्ट है उसके सामने उसकी जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर करना होता है। तो जो की सेक्शन है हमारे CRPC में दिए गए हैं, जो कि चैप्टर 33 के अंदर हैं। तो जो की सेक्शन है वो है 436 एंड 439 विच डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ बेल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बेल कब ग्रांट की जा सकती है और बेल कब ग्रांट नहीं की जा सकती है। तो इन CRPC जो बेल है उसको तो डिफाइन नहीं किया गया है, बट जस्ट CRPC हैज़ डिफाइंड द टर्म बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस we can say that an offence which is shown as bailable in first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. And the non-bailable offences means that the other offences other than bailable offences. तो जो भी बेलेबल है ऑफेंस उनको छोड़ के बाकी सब नॉन बेलेबल है। तो जो डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में इज द डिस्टिंक्शन इज दैट के बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस and danger of accused absconding, we can say, or tampering of evidences, or previous conduct, health, age, sex of accused person. So there are so many reasons. जो बेलेबल और नॉन बेलेबल हैं ऑफेंसेस जो हमारे CRPC में प्रोवाइड किए गए हैं। It is the mostly offences which are punishable with imprisonment not less than 3 years that are classified as non-bailable offences. तो जो बेसिक रूल है बेल को ग्रांट करने का और डिनाई करने का, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से समराइज़ किया गया है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि देर आर 2 kinds of offences, bailable और non bailable offences. So in case of bailable offences, section 436 CRPC, it is the right of accused to demand and to be granted bail, and in certain basic criteria while exercising the judicial discretion for grant or denial of bail in case of non bailable offences has been laid down in section 437. ये section 437 में दिया गया है in CRPC. In the cases related to non-bailable offences, some of their criteria include the nature of offences, या past criminal record, या probability of guilt. And section 438 of CRPC deals with anticipatory bail in cases where there has an apprehension to arrest. There are other factors also which are to be kept in mind by the honorable court before granting of bail, like the जैसे कि possibility of threatening क्या है कि जो accused है वो
विटनेसेस को जो है ना थ्रेटनिंग तो नहीं करेगा, या जो एविडेंसेस हैं जो एक्यूज़ के अगेंस्ट हैं कभी वो उनको टेम्पर्ड ना कर दे। तो ये चीज़ें भी कोर्ट को अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो इन जमशेदपुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट if in a session court, if the magistrate has granted bail, the accused need not seek bail from the court of session. So in Haji Muhammad Wasim versus state of UP also, before the Allahabad High Court, इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ था वैलिडिटी को लेके, जो कि पुलिस द्वारा जो भी बेल ग्रांट की गई थी। तो in that case the accused is on bail which was granted by police, preferred to not appear before the court. Hence here the trial court issue a non-bailable warrant which was then challenged by the accused under section 482. So it was ruled out by the court that he has to take a fresh bail from the trial court. अब हम बात करेंगे बेल बाय पुलिस। तो जो पुलिस ऑफिसर की जो पावर है टू रिलीज ए पर्सन ऑन बेल हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इज़ इन हिज कस्टडी आल्सो, इसमें दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। नंबर वन, व्हेन विदाउट एनी वारंट द अरेस्ट इज मेड, एंड द सेकंड वन इज दैट when the issuance of warrant the arrest is made. So the power to grant bail by police has been conferred. There are so many sections in CRPC, like section 42 है, 43 है, 56 है, 59 है, 169 है, 170 है, 436 and section 437 also. So the power of police to grant bail under these heads are controlled by the direction जो कि एंडोर्स की गई हैं सेक्शन 71 ऑफ दिस कोड। तो इट इज़ अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कोड, हाउएवर विच एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर टू ग्रांट बेल व्हेन द पर्सन अरेस्टेड और प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ एन कमीशन ऑफ ए बेलेबल ऑफेंस, even when there is no direction of such effect it has been given in the warrant. In case of non-bailable offences, the endorsement on warrant has to be strictly followed, that is necessary. जो endorsement on warrant however should be by the name, that is the condition. तो अब हम बात करेंगे bail when arrest made without warrant। जब अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट के, उस कंडीशन में कैसे बेल दी जाती है। तो ये प्रोविज़न है हमारे CRPC में सेक्शन 42 में। तो सेक्शन 42 कैन बी इन्वोक्ड व्हेन द ऑफेंडर रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस और गिव्स ए नेम एंड एड्रेस विच द पुलिस ऑफिसर कंसिडर टू बी फॉल्स। इनके अगर एक्यूज्ड है वो अपना नाम या अपना एड्रेस बताने से इनकार करता है, या नाम और एड्रेस ऐसा बताता है कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, तो इफ़ दोज पर्टिकुलर्स आर विद इन द नॉलेज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, नाइदर द क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट नोर द क्वेश्चन ऑफ बेल विल अराइज। हाँ जी, तो एज सुन एज नेम एंड एड्रेस हैज़ टू बी एसरटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डिटेन हिम। अगर पुलिस ऑफिसर को नाम और एड्रेस अगर वो सेटिस्फाई है कि इसने सही बताया है अपना, तो उसको डिटेन नहीं कर सकता है, एंड इफ़ इज़ विलिंग टू एग्जीक्यूट द नेसेसरी बॉन्ड। सो अब हम बात करेंगे बेल अंडर सेक्शन 43। सो द CRPC प्रोवाइड्स फॉर द अरेस्ट ऑफ पर्सन बाय ए प्राइवेट पर्सन आल्सो, दो हिज पावर ऑफ अरेस्ट are very limited. After the arrest has been made, the arrested person should be without unnecessary delay hand over to a police officer, or in his absence
he must be brought to the nearest police station. The question of bail will depend upon what opinion the police officer forms about the person brought before him. If there is a sufficient ground to believe that the arrested person has committed an offence, तो he shall at once be released. उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर sufficient ground है तो. So if there is a reason to believe that such person comes under the provision of section 41, a police officer is entitled to receive a person arrested under this section. But where a chowkidar is a police officer under the छोटा नागपुर रूरल पुलिस एक्ट 1914 का एक्ट है ये, he can receive a person arrested under section 59 CRPC, old CRPC, and detain him in custody. He has empowered. तो अब हम बात करते हैं बेल अंडर सेक्शन 56, 57, 59 CRPC. तो सेक्शन 56 मैंडेट करता है दैट ए पुलिस ऑफिसर अफेक्टिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट must take or send the offender arrested before a magistrate having jurisdiction in the case before the officer in charge of police station. But in section 56 there is an inbuilt provision authorizing police officer to admit the arrested offender to bail, but power of police officer in that case is subject to be provision herein contained as to bail. So friends, section 56 of new code corresponds with section 60 of the old code. So now section 57 provides that a person arrested not being detained more than 24 hours. अगर कोई भी पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया पुलिस ने, तो उसको 24 आवर्स से ज़्यादा वो अरेस्ट नहीं कर सकता है. तो इसमें जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर की वो ये है कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड पर्सन जल्द से जल्द विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, जो भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट हो, और बिल्कुल इसमें बहुत ही लिटिल डिले होना चाहिए. तो सेक्शन 57 जो है ये प्रोवाइड करता है हमें कि अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर के दौरान विद इन 24 आवर्स एक मजिस्ट्रेट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने उसको पेश कर दिया जाए. सो इट हैज़ बीन स्टेटेड इन सेक्शन 59 ऑफ द कोड दैट एनी पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड ओनली बाय हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट. सो अब हम बात करते हैं बेल जो है बेल अंडर सेक्शन 169 ऑफ CRPC. सो फ्रेंड्स, जो दिस सेक्शन रेफर्स टू द ग्रांट ऑफ बेल नॉट एट द स्टार्ट बट ओनली ऑन मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 ऑफ दिस कोड. Till then, bail is not authorized under the provision of this section. The power to release on bail a person in custody vests in officer in charge of the police station or the police officer making the investigation. So, an officer in charge of the police station or an investigating officer cannot release a person on bail if he has appeared as an accused before the magistrate on the basis of a complaint in respect of incident which the police is also investigating. So if the officer in charge of the police station on the investigating officer takes a bond from the accused for his appearance before the police, it is void ab initio. ये बिल्कुल null and void है. सो अब बात करते हैं हम बेल अंडर सेक्शन 170 ऑफ CRPC. सो अंडर दिस सेक्शन द अथॉरिटी टू ग्रांट बेल occurs to an officer in charge of the police station if the offence is bailable. So that a station officer is empowered to grant bail if investigation has disclosed the offence to be bailable and it is immaterial what the initial accusation against him was.
So under the imperative provision of section 170, an officer in charge of the police station has either to forward the accused in custody, or if the offence is bailable or on investigation found to be bailable, to accept bail for his appearance before a magistrate. He cannot entertain an application for the withdrawal of a complaint, so therefore he cannot discharge an accused. So the next provision related to bail, we can say under section 437 of CRPC. So section 437 जो है CRPC का, in that section the power to release on a bail a person accused of a non-bailable offence is conferred upon only one class of police officers, namely an officer in charge of the police station under section 437 subsection 1. So when an officer in charge admits an accused to bail, it is mandatory for him to record the reason or special reason in the case diary and preserves the bail bond until they are discharged, either by the appearance of the accused in court or by the order of a competent court. For the purpose of bail in non-bailable offences, the legislature has classified them under two heads. The one is those which are punishable with death or imprisonment of life, and the second one is those which are not so punishable. The age or sex or sickness or infirmity of the accused cannot be considered by a police officer for the purpose of granting bail. These matters may be taken in view of by the court only. सिर्फ कोर्ट को ही डिस्क्रिशन पावर्स हैं ये जो है किसी भी एक्यूज को के सेक्स, एज, सिकनेस के बिहाव पे उसको कंसीडर करे बेल ग्रांट करते हुए, तो पुलिस ऑफिसर हैज़ नो सच टाइप ऑफ पावर्स. तो दीज मैटर में बी टेकन इन व्यू बाय द कोर्ट ओनली. An officer in charge of the police station may grant bail only when there are no reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, or when the bailable offence complained of is not punishable with death or life imprisonment. So अब हम बात करते हैं bail by police when arrest made in pursuance of warrant. So the relevant provision of the code of procedure in connection with this is confined under section 71 and 78 of CRPC. So अगर हम बात करें section 71 की CRPC के, the relevant provision of the code in connection, तो when a person who is to be arrested is not arrested until the date on which he has to attend the court the direction regarding द टेकिंग ऑफ बेल लैप्सेस. तो बात करें अगर हम सेक्शन 80 और 81 की, तो व्हेन ए वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड बाय पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द कमिश्नर ऑफ पुलिस मे रिलीज एन अरेस्टेड पर्सन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस contained in the endorsement, but a district superintendent of police, the commissioner of police in presidency town within the local limit of those jurisdiction the arrest was made shall release on bail the arrested person if the offence is bailable and such person is ready and willing to give bail to their satisfaction. A police officer cannot release a person on bail simply because the arrested person is accused of a bailable offence. He has to comply strictly with the contents of the endorsement if there is any endorsement. तो अब हम बात करते हैं bail to lunatics. तो section 330 of CRPC laid down bail cannot be claimed as a matter of right for person of unsound mind. Court
have been vested with great powers and wide discretion in the matter of grant or refusal of bail. A magistrate may release a person of unsound mind on bail even though he is charged of an offence of the most heinous type, and may refuse bail in bailable cases if he is of the opinion that bail should not be allowed. So there is a very vast discretion of powers in the court in our India. An accused of unsound mind may be released on security irrespective of the offence which he is charged, not only on the finding by the court that the accused is of unsound mind, but also prior to such findings during the pendency of the inquiry into his state of mind. So when an offence as in described in section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of IPC is committed in the view of or presence of a criminal court, and that court, instead of proceeding under section 345 of CRPC, considered that the person accused of any of the offences referred in these above sections which I discussed above should be imprisoned otherwise than in default of fine, or that a fine exceeding 200 rupees should be imposed upon him. Then the court, after it has recorded the fact constituting the offence and the statement of accused, may forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same. So magistrate, in case sufficient security is not given under this section as under the provision of section 340, the person complained against has not to apply for bail to the court. It is the direction of the court forwarding the complaint either to ensure the attendance of the accused by demanding a security for his appearance before the transferring magistrate, or it may just inform the accused on the date on which he has to be appeared before the court. So he cannot be taken in custody merely because he has not applied for bail. He can be taken in custody if security is demanding from him and he does not give sufficient security. तो that can be a reason, ये एक रीज़न हो सकता है. तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 360 ऑफ CRPC. तो सेक्शन 360 ऑफ CRPC डील करता है बेल्स टू फर्स्ट ऑफेंडर. तो इसमें जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 360 का CRPC का, डील्स विद द पावर ऑफ ए कोर्ट और ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ टू रिलीज a convicted offender on his entering into a bond with or without securities to appear and receive sentences when called upon during such period which not exceeding 3 years, as the magistrate may direct, and in the meantime to keep the peace and be of a good behavior. The magistrate thus has a direction either to punish the offender with imprisonment or release him on probation of good conduct. तो अब हम बात करते हैं पोस्ट कन्विक्शन एंड प्री अपील बेल विच आर गिवन अंडर सेक्शन 389. This section contemplate post conviction and pre-appeal periods pending an appeal against conviction. Appellate court जो है may release the convict on bail, and high court can exercise his power when appeal lies to session court. So far as the court convicting the accused is concerned, the court is bound to admit the accused to bail pending order passed by appellate court or high court. When the accused was already on bail and has been sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years,
and when the offence was a bailable one, even on fulfillment of the condition, court on convicting the accused may refuse his bail if there exists a special reason. So under this section, an intention to present an appeal on the part of the convicted person is sufficient reason to justify the bail, to justify the release of a convicted person on bail. So it may further be noted that an order of bail under this section is for a limited period only and is applicable only to convicted person and not to those person who are bound over. सो अब हम बात करें बेल अंडर सेक्शन 437 की. सो इट डील्स विद बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस. तो ग्रांट ऑफ बेल इज ए रूल वेयर एज रिफ्यूजल इन दिस कंटेस्ट इज एन एक्सेप्शन. A person accused of bailable offences has the right to be released on bail in the cases of bailable offences is compulsory bail. It is a discretionary option to grant a bail to a person accused for bailable offences. When a person who is suspected of committing a bailable offence is produced before a magistrate and he is prepared to give bail, magistrate has to release him on bail without having any other option. तो अब हम बात करें सेक्शन 437 की, बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 437 empowers two authority to consider the question of bail. So number one is a court which includes a high court and a court of session, and the second one is an officer in charge of the police station who has arrested or detained without warrant a person accused or suspected of the commission of a non-bailable offence. Although this section deals with the power or discretion of a court as well as a police officer in charge of police station to grant bail in non-bailable offences, it has also laid down certain restrictions on the power of a police officer to grant bail and certain rights of an accused person to obtain bail when he is being tried by a magistrate. So अब हम बात करें क्राइटेरिया फॉर जुडिशियल डिस्क्रिशन टू ग्रांट और रिफ्यूज बेल. So the judicial discretion has one of the most important fundamental right granted under आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है. तो जो ग्रांट ऑफ बेल हम कह सकते हैं कि ये एक जो पर्सनल लिबर्टी है किसी पर्सन की, उसको लेस हार्म हो, तो इसलिए जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनको ये डिस्क्रिशन दी गई है कि जो ग्रांट ऑफ बेल है मे बी गिफ्टिंग पर्सनल लिबर्टी टू ए पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड और हु इज़ एंटिसिपेटिंग एन इमिनेंट अरेस्ट. मतलब वी कैन से रिफ्यूजल ऑफ बेल implies sending that person to jail or to police custody as the case may be, and thereby depriving that person of his personal liberty. तो मतलब that after the discussion of all the provisions which are related to bail, तो in fact we can say the question of bail or jail has a bearing not only on the individual concerned but also on the society in general. For an innocent person sent to a jail may not occur bail. कि अगर किसी इनोसेंट पर्सन को अगर जेल भेज दिया जाए तो वो भी ठीक बात नहीं है, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही गलत मैसेज जाता है. और वेयर एज ए डेंजरस जो क्रिमिनल है रिलीज्ड ऑन बेल
can do more harm to the society by way of destroying the evidence which we discussed earlier, or threatening the witnesses, or evading the judicial process. uh, और मे बी बाय कमिटिंग मोर ऑफेंसेस, वो हो सकता है बेल मिलने के बाद वो और ज़्यादा ऑफेंस करे बाहर आने के बाद, अगर वो हैबिचुअल क्रिमिनल है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जुडिशियल डिस्क्रिशन कैन नॉट देयर फॉर बी अंडरस्टेटेड. तो जुडिशरी के पास एक बहुत ही वास्ट डिस्क्रिशन है रिगार्डिंग द बेल. और judiciary, there are so many provisions which are discussed in this lecture. So we can say जो बेल है और जेल है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये डिपेंड करता है केस टू केस पे. So friends, these are all the provisions in CRPC which was related with bail, जो कि बेल से रिलेटेड थे, और बेल कब और किस कंडीशन में कौन कौन ग्रांट कर सकता है. सो देयर इज़ ए कोर्ट एंड देयर इज़ आल्सो ए पुलिस विच एम्पावर्स बाय आवर CRPC to grant a bail or to refuse a bail. So friends, these are the provisions which are related by the bail in our CRPC. Thanks a lot.